All right. I guess we are live now, and welcome everyone. Thank you so much for joining us today. Here we are back again in another webinar organized by the Art and Education Board Pakistan. Today we have with us a very esteemed speaker, um, development practitioner, and we're going to know more about her project, about her work in this webinar as well. So the webinar, as you might have already read the title, it's called Crossing the Road to Entrepreneurship, and therefore in this webinar we're gonna discuss in detail about a road to entrepreneurship, and b what are the skills required um, as an entrepreneurial culture. So here we have with us today Ms. Sonal Dhanani. Thank you so much, Appa, for joining us today. So before we just start, I'm just going to go over the segments into which we have divided this webinar. There are going to be 3 to 4 sections. The first one is going to be about unpacking Parinde, which is the social venture co-founded by Sunalapa, followed by the second segment, which will be about road towards entrepreneurship, in which we're going to discuss in detail about social entrepreneurship and social enterprise, the difference in between them. And of course, we're also going to discuss or slightly touch upon getting these enterprises as well as ventures registered in Pakistan. And then, of course, in the last section, in the third section, we're going to talk about the role of volunteerism, leadership, and management skills, followed by the very last section about questions and answers, in which we are looking forward to some great, simple, short, but great questions. All right. So, without further ado, let's start our conversation with Sonal Appa. So, Appa, if you can just simply brief what is Parinde? Is it a business? It is a project? What is it that you do in Parinde? Hi everyone. First of all, thank you so much for Shanil and the Education Board for hosting this. Of course, it's a pleasure to be here. हम अपनी गुफ्तगू को जो मिक्सचर रखेंगे उर्दू और इंग्लिश का ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको समझ सकें. So जो शानिल का सवाल है, शानिल it started as an initiative. परिंदे जब स्टार्ट हुआ तो वो एज ए इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था, बट लेटर ऑन इट गॉट रजिस्टर्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन एंटरप्राइज. और हर चीज़ की एक कॉलिंग होती है. सो आई थिंक व्हेन आई रिफ्लेक्ट, मैं अब जब रिफ्लेक्ट करती हूँ तो मुझे लगता है कि बिट्स एंड पीसेस में वो कॉलिंग मेरी लाइफ में हमेशा मौजूद थी. इट वाज जस्ट एज सून एज आई वाज एबल टू कनेक्ट द डॉट्स, जैसे ही मैं डॉट्स को कनेक्ट करती हूँ अब, तो मुझे लगता है कि सूनर और लेटर मैं यही कर रही होती जो मैं अभी कर रही हूँ. इट केम लिटिल लेट इन माई लाइफ, बट it is the right thing I can say कि this is where I know कि ये मेरी inner calling थी. So this inner calling started as an initiative. There's something out of passion मैं करना चाहती थी for community, for myself. But then with the changing landscape of Pakistan, economic landscape जैसे change हो रहा था, startup landscape जैसे change हुआ, entrepreneur landscape जैसे पाकिस्तान में बढ़ता गया, the same initiative became one of the registered organization. Right, right. So, Appa, क्या ये शुरू से the inner calling that you talked about? So, इस inner calling में initiative से social entrepreneurship की तरफ हमने जो है वो transit किया है. तो idea शुरू से क्या ये था कि हम एक social entrepreneur social venture start करना है या enterprise start करना है, या you just started with a project और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद develop होता गया? So यहाँ पे हम थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन को अभी टच करेंगे, द लास्ट पार्ट ऑफ वॉलंटियरिज्म. सो आइडिया कभी भी ये नहीं था. एज अ सेल्फ आई वाज नेवर हैड दिस मेंटालिटी और माइंडसेट कि कभी मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन हो. आई थिंक जो जो मेरे टाइम के 1990s वाले जो हैं, दे कैन रिलेट टू दिस. वी वर नेवर नर्चर्ड इन दैट वे. वी वर नेवर कंडीशन इन दैट वे. आवर ब्रेन वाज कंडीशन कि हमेशा कोई अच्छी जॉब करनी है, किसी अच्छी जगह पे लग जाओ. So even when we were in like our education system, चाहे वो स्कूल था, कॉलेज था, यूनिवर्सिटी था, हर जगह पे हमारी ब्रेन कंडीशनिंग तो ऐसे ही हुई थी कि जॉब कर देनी है, जॉब पे जाना है. जॉब की भी अच्छी जॉब क्या होती है, उसका भी कोई रिक्वायरमेंट सेट नहीं था. बस माहौल अच्छा हो, 9 to 5 की जॉब हो, बहुत वेग कंडीशनिंग थी.
तो उस टाइम उसको मैं कभी नहीं कह सकती कि फ्रॉम द बिगनिंग आई वांटेड टू डू दिस, बट इट वाज वॉलंटरिज्म व्हिच गिव मी दिस स्पार्क कि मुझे करना क्या है. So my journey started like right after my bachelor's, as probably every person from our community, the dream was to be in any institution. किसी institution में हम job करें. That was the direction given. That was the goal set. So I started my journey as a research assistant with Institute of for Education Development (IED) के साथ मैंने शुरू किया. और वहाँ पे I realized कि that project was based in Quetta. उसमें I was traveling to Quetta for early childhood education. So when I was there, I realized कि I was bucked up with my teachers कि you are too good in marketing, तुम्हारे marks बहुत अच्छे हैं, तुम अच्छी examples दे देते हो. तो मेरा brain conditioning ऐसी थी कि I will grow in the area of marketing. I did my MBA in marketing as well. But in my first job, when I was there, with IED in Quetta, I realized how much I loved being there with the teachers on ground. How much I loved being there in the field when I saw those students smiling जब उनके early childhood के जो corner setup हो रहे थे उनके room में. जब वो बच्चों से मैं इंटरव्यू ले रही थी and I was asking कि क्या फ़र्क लगता है early childhood के बाद और क्लास आपकी टीचर में क्या चेंज लगता है, स्कूल आने का क्यों दिल करता है, अब पहले क्यों नहीं दिल करता था, पेरेंट्स का. That gave me a craving कि this is something I thoroughly enjoyed, as if something where I could feel that my soul lies. मुझे ऐसा फील हुआ कि ये वो काम है जो मैं हर दिन करूँगी तो इतनी खुशी से करूँगी. But that got parked there. Again, the reminder of a better job. This was a part-time job. So I got an opportunity to work as an associate to the President Froz Rasool, Aga Khan University. So in 2013, I started working there. And that's where one, like उससे बिल्कुल कुछ महीने पहले, one of the great opportunity which changed my life jumped in was the Jugnu camp. आगहान यूथ एंड स्पोर्ट्स बोर्ड के पोर्टफोलियो में फर्स्ट टाइम यंगर किड्स के लिए कुछ इनिशिएट हुआ था. दैट वाज द कैंप जुगनू, प्योरली फोकस एट ऑल्टरनेट एजुकेशन. सो जब भी मैं अपनी जॉब पे थी आगहान यूनिवर्सिटी में, आई रियलाइज कि मेरी जॉब में मैं हर वक्त इंतज़ार कर रही हूँ कि अब कब जुगनू होगा, या वो या तो विंटर जुगनू या तो समर जुगनू, तो वो दोनों बस वही उसी का इंतज़ार. और आई रियलाइज़ कि ये जॉब मैं कर तो रही हूँ, ये मेरी स्किल्स को डेफिनेटली पॉलिश कर रहा है. नॉट एवरीवन will ever get an opportunity that right after the like your bachelor's degree you get to work with the president, or you get to work at such a prestigious department of the Khan University. A lot of learning. I can never deny कि उसने मुझे कैसे polish किया है professionally. But at the same time, I knew कि this desk is not my place. I knew कि like ये मेरी limitation है. And वहाँ से I start, like Jugnu was there and I started giving my a lot of energy to Jugnu. तो वो मेरे अंदर built होना शुरू हुआ कि मुझे ये realize हुआ voluntary उसके ज़रिए कि मेरी कंडीशनिंग जो स्कूल टाइम पे या वैसे हुई थी, वो कंडीशनिंग थी. वो एक मुझे पिक्चर दिखाई गई थी कि करियर ऐसा होता है, फ्यूचर ऐसा होता है. बट थ्रू वॉलंटरिज्म आई वाज एबल टू फाइंड आउट कि नहीं, इसमें भी करियर हो सकता है, या करियर तो वो होता है जो मैं ऐसे एंजॉय करूँ जैसे मैं ये एंजॉय करती हूँ. या पैशन तो ये है ना कि जब मैं जॉब पे आ रही हूँ तो मैं हर दिन इस एनर्जी से आऊँ जिस एनर्जी से मैं कैंप का काम करती हूँ. तो वहाँ से आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि काउंसलिंग की कितनी कमी रही थी थ्रू आउट दी एजुकेशन फील्ड, क्योंकि किसी टीचर ने कहा कि अच्छा जी मार्क्स अच्छे आते हैं तो आई थिंक तुम्हारा करियर इसमें होना चाहिए, और आपको भी लगता है हाँ मेरा करियर इसमें होना चाहिए. बट थ्रू वॉलंटरिज्म आई वाज एबल टू आइडेंटिफाई कि नहीं, मार्क्स अच्छे आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि करियर में भी मैं वो एंजॉय करूँगी. वॉलंटरिज्म वाज एबल टू गिव मी दैट फ्लेवर कि नहीं, मेरा काम इज टूवर्ड सोशल सेक्टर. I like building communities. I like working for communities. I like co-creating with the communities. And that behavior started in building. जब वो वहीं पे मौजूद था, then there was unfortunate incident at the community in 2015, the Safura incident. उसकी learning ने that changed the entire lens for my life. And that's where I saw कि किस तरीके से I can integrate arts and creative education as a remedy, as a therapy. I went for my diploma to become art as a therapy practitioner. And that's how I picked up Parinde. And
My major realization was कि हमारी community में we have institutions, we have support system available in our surrounding. So unfortunately, अगर किसी का कोई lifetime like any hard experience, they still have support available. But after that Safura incident, I realized कि what about the sister communities in Pakistan? उसी से कुछ टाइम पहले कराची में अब्बास टाउन के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था. I started realizing कि उनको कौन जाके पूछ रहा है? If they need a support system, especially in your uncertain times as your mental stability, they don't have someone. And that's how I jumped into the area of building resilience and taking therapies to the community, and Parinde came into being. Wow. Well, I think that's amazing. That's thank you so much for sharing your story with us. So for the audience, and if you could just tell us कि परिंदे में exactly what are the projects that you do? बहुत सारे projects हैं जो कि आप परिंदे की umbrella के अंदर आ रहे होते हैं या is it just art therapy that you're focusing on? नो ऑफ कोर्स जर्नी जब आप शुरू करते हैं आपका फोकस किसी एक चीज़ पे होना चाहिए. दैट्स द टिप आई वुड लाइक टू गिव. अगर आप शुरू की जर्नी में कहते हैं कि यार हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, हम एक इनिशिएटिव शुरू करेंगे और हम ये कर लेंगे, तो वो कभी भी आपको स्ट्रेट डायरेक्शन नहीं मिलती. परिंदे बहुत फोकस उससे स्टार्ट हुआ था क्रिएटिव रेमेडीज, आर्ट एंड म्यूजिक थेरेपी. हमने इवन जुगनू को भी साइड पे रखा कि जो हमारा कोर है. फॉर 4 years वी डिड 15 जुगनू कैंप्स इन पाकिस्तान. तो हमने उसको भी होल्ड किया कि वी विल नॉट कंटिन्यू सेम ईयर. Our focus was purely like toward expression, towards mental health, and using art as the tool. So we started with a creative remedies program, but within the journey, as soon as you एक जो process होता है, startup का process होता है, it's very similar to when a mother gets pregnant, when like she's incubating the baby for 9 months. So when you conceive idea for your business, you are in incubation. अगर आप उसमें बहुत सारे आइडियाज कंसीव करते रहेंगे, you will not be able to grow and focus at one. So we focused at one. So we incubated our therapy and creative therapies for a longer time, till the time we felt कि we have footed our grounds in the communities. जब हमें लगा कि हम communities तक जो है वो पहुंच रहे हैं, where we felt कि communities are receiving this idea well. Then we started moving towards from individual and communities to organization. फिर हमने corporates के साथ mental health programs पे काम शुरू किया. We started moving towards peace building as well. जो हमारा recent project चल रहा है is towards digital well-being. So इस तरीके से फिर diversification आते गए. So currently we have several programs. We have creative remedies under us, under जिसके अंदर हम theater, music और art therapy करवाते हैं. We have alternate educational programs, जिसमें we have teachers training and other non-curriculum content with us, जिसकी trainings हम करा रहे होते हैं. And then we have a great focus towards the peace building side, जिसके अंदर digital well-being, digital peace and peace at the general in the community, and the standalone जिससे हम कमा रहे होते हैं, that is the corporate portion जहाँ पे हम paid programs offer करते हैं. So our structure is like it's a hybrid structure where we are non-for-profit and we are for-profit as well. So we earn from the portion of the community which is willing to pay and can pay, and then we invest that to the portion of the community which cannot afford access to the mental health and therapies or any sort of remedies. Right. So actually, you have answered one of my questions as well, जो कि मैंने just अभी अभी लिखा कि how do you sustain परिंदे? But in that question, the query still stands कि for a larger period of time, आपके पास जो project था, it was on music and art therapy, right? And then you expanded it, which is exactly as you said, हमारे पास startup या venture start किस तरह से होता है? You focus on one thing and then you expand it. Once you have created a good, a strong foothold on something. But उस larger period time तक, काफी time तक जो आप सिर्फ music और art therapy पे काम कर रही थी, how were you sustaining it? किस तरह से project को sustain हो रहा किया जा रहा था? A and B, एक motivation किस तरह से थी? Because now you know that even startup culture in Pakistan as well, you know that you're not gaining a lot from that project, right? तो उस चीज से किस तरह से आप कवर कर रही थी?
दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। आई थिंक जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं या लीडरशिप की बात करते हैं तो हमारा फोकस सस्टेनेबिलिटी में सिर्फ मनी होता है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। सिर्फ पैसे से सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी। वन ऑफ द सस्टेनेबिलिटी एज अ लीडर इज दैट हाउ डू यू कोप अप विद द अनसर्टेन सिचुएशंस। आई एम श्योर कितने स्टार्टअप्स होंगे जो कोविड में पूरे हिल गए, इंक्लूडिंग आस। सो जब मैं सस्टेनेबिलिटी की बात करती हूँ, सो वन थिंग वाज द बिहेवियरल सस्टेनेबिलिटी इन अस, कि जब हमने परिंदे स्टार्ट किया एंड वी थॉट के ओके दिस इज गोइंग टू बी इनिशिएटिव, देन वी थॉट ओके वी हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड एंड विल स्टार्ट। we had to prepare ourselves कि it will take time, that this journey will take time. For a good year, for starting 3 years, we had this in mind कि we are not going to earn through it. Of course मैं ये सबको नहीं recommend करती. Me along with my team, we were working full time somewhere else and we were supporting Parinde and growing Parinde in a part time capacity. Now I work full time for Parinde. But वो इतने सालों के बाद I was able to take this decision कि नहीं, now we are at this point where I can meet my financial need through Parinde and I need to park my other assignments and focus here. लेकिन मैं सबको ये recommend नहीं करूँगी कि जब आप ऐसे स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आप ये रखें दिमाग में कि आप इससे पैसे नहीं कमाएंगे। ऑफ कोर्स कुछ हर किसी के पास ये सिचुएशन फेवरेबल नहीं होगी, नॉट एवरीवन इज प्रिविलेज इनफ टू गिव योर टाइम टू अ प्रोफेशनल जॉब और फिर आप अपना स्टार्टअप भी करें। बट आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि जब आप एक नया स्टार्टअप शुरू करते हैं, आप कोई नया काम शुरू करते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक रखें। रियलिस्टिक इन अ वे कि ये ना सोचें कि 2 महीना 3 महीना और आप यू विल लाइक देयर विल बी मनी रेन, ऐसा नहीं होगा। इट विल टेक टाइम, इट विल बी स्लो। सो परिंदे के उसमें जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, वी स्टार्टेड द अप्रोच कि वी विल वर्क फुल टाइम और हम इसके ऊपर जो है वो टाइम दे रहे होंगे। we had to put money from our side. Example, जब मैं कह रही हूँ कि we had to take therapy to the community. Of course, community was not willing to pay. There is such a stigma attached to mental health. It is not a digestible or acceptable topic. People were not ready to pay for the workshops. So we were the one who were investing our own money, but we focused कि हमें community centric approach पे रहना है. We cannot be on the other side where we announce the program and wait for the people to come. But हमारी approach ही community centric थी, where we say कि we will take programs to the people. We Right. realize that this is such a tough territory. This topic is not acceptable, is still not acceptable. So we invested our own resources and took programs to the community. It stayed, and then we start when we had the confidence कि चलो now we will build something for corporate. Corporate को we didn't offer for free. That we were clear. We knew कि ये वो chunk है जिसके पास पैसा है, they can pay. So as a startup, you need to, or as a young leader, you need to keep in mind कि आपकी skills हैं, आप किसको फ्री में ऑफर कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। आई सी यंग एंटरप्रेन्योर्स कॉम्प्रोमाइजिंग अ लॉट बिकॉज उनको ये बताया जाता है कि यू आर जस्ट अ यंग स्टार्टअप। सो यू नीड टू हैव अ कॉन्फिडेंस कि जो हम ऑफर कर रहे हैं उसकी वर्थ क्या है, और जब तक आप वो वर्थ नहीं कहेंगे आपको वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। सो अगर मैं कॉर्पोरेट को कहती हाँ बिकॉज वी आर न्यू सो वी आर गोइंग टू डू आवर थेरेपी फॉर यू फॉर फ्री, सो उसका एटीट्यूड ही फॉर फ्री बिल्ट होता तमाम कॉर्पोरेट्स के लिए। बट वी न्यू के कम्युनिटी में वी वांट टू डू फ्री, but we don't want to go free for the corporates. So we set this clear guideline, and then we started pitching for small donations. We started pitching for a small grant, and then we started receiving small grants. लेकिन वो small grants तभी मिले थे जब we were able to prove that we have worked and our work has impact. सर ये बहुत ज़रूरी है, प्रोटोटाइप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रोडक्ट फोकस हैं, प्रोटोटाइप करें, कुछ हो जिससे पता चले कि होगा क्या। आप सर्विस फोकस हैं, कुछ बताएं कि इसकी मदद से आप प्रूव कर सकते हैं कि इस काम का इम्पैक्ट है। सो वी टुक अवर टाइम टू शो कि हमारे काम का इम्पैक्ट क्या है, एंड देन वी स्टार्टेड asking for money. Then we even did a open public paid program जहाँ पे we invited larger community to pay for our session and attend the session. So आपका रोड मैप होना बहुत ज़रूरी है। In the beginning you might have to invest money from your side, but at the same time I recommend कि प्लीज़ ये एक्सपेक्टेशन के साथ शुरू ना करें कि 3 महीने में अपने पैसे लगाऊंगा और आगे इसके बाद 3 महीने मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे या मुझे इसका डबल रिटर्न मिलेगा। It will be slow. Right. Slow and steady wins the race. Yeah. I think during this discussion, you have touched upon something very important as well, which you mentioned कि हमारे पास community centric and human centric जो है वो
design raha hai parinde ka. And I guess it is also something crucial to our young entrepreneurs कि मॉडर्न टाइम्स के अंदर जब उस वेंचर स्टार्ट कर रहे होते हैं तो डिजाइन थिंकिंग के अंदर ह्यूमन सेंट्रिज्म जो है समथिंग रियली इंपॉर्टेंट. दे हैव टू थिंक कि Yeah. आखिर किस तरह से कम्युनिटी को क्या जरूरत है, एंड दे हैव टू बी वेरी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स देम. So I think again, thank you so much for that. My next question is something related to the current situation, because we all are going through the pandemic, and you also mentioned कि कोरोना ने जो है वो परिंदे को भी कुछ टाइम के लिए हिला के रख दिया. Hmm. So my question is कि how what first of all, what were the problems and challenges that you faced during the pandemic, and how did you deal with this kind of uncertainty? तो थेरेपी का और जो इमोशनल वेलबींग के सेशन होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट बहुत डेवलप्ड है 1-to-1. सो ऑफ कोर्स हमारे भी आर्ट थेरेपी, म्यूजिक थेरेपीज ऑन ग्राउंड होते थे. सो जब कोविड हुआ तो कोविड के अंदर वी एवरीबडी एक्सपीरियंस के मेंटल हेल्थ तो बड़ा ग्रोइंग चैलेंज है. अब इशू ये आ रहा था कि जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं वो पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है. तो पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया कि भाई ज़हनी सेहत इज़ अ मेजर इशू, इसके ऊपर काम करना है. ज़हनी सेहत लाइक मेंटल हेल्थ इज़ अ न्यू पेंडेमिक. बट प्रॉब्लम ये आ रहा था कि अब इंटरवेंशंस तो सारी ऑन ग्राउंड वाली है. अब जो बिहेवियर हम बिल्ड किया था कि जब आप सेशंस कर रहे हैं तो लोग आए, तो अब क्या करें? अब तो हम नहीं जा सकते ऑन ग्राउंड, या वी कैन नॉट अफोर्ड गैदरिंग पीपल. ऑफ कोर्स एक पेंडेमिक है, उसको भी आप इग्नोर तो नहीं कर सकते. बट एट द सेम टाइम वी रियलाइज्ड कि कोविड ने आपकी मार्केट कितनी बड़ी कर दी. फॉर एग्जांपल, होल वर्ल्ड इज माय कस्टमर. सो मैं Right. जूम की मदद से ऑनलाइन रहते हुए पूरी दुनिया को इन टूल्स की ज़रूरत थी, राइट? Everybody was struggling, and art therapy is something which could very well be implemented through online tools. So we took our time to develop a program. हमने ऑनलाइन आर्ट थेरेपी को टेस्ट किया. अगेन वी टेस्टेड विद द कम्युनिटीज़, अपनी कम्युनिटीज़ के साथ. हमने इंस्टीट्यूशंस के साथ ऑनलाइन सेशंस करवाए. आई डिड इट फॉर गाइड्स, आई डिड इट फॉर आखान यूनिवर्सिटी, वी डिड इट फॉर अल अज़हर कम्युनिटी. सो हमने अपनी अपनी कम्युनिटीज़ में इसको टेस्ट किया, अलग अलग अप्रोचेस को टेस्ट किया. वी ट्राई टेस्टिंग म्यूज़िक थेरेपी एज वेल, वी टेस्टेड माइंडफुलनेस. हमने काफ़ी सारे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स को टेस्ट करना शुरू किया. एंड देन वी फेल्ट कि नाउ रियलाइज कि आप, मैं इसको पूरी दुनिया में कहीं भी जो है वो पिच कर सकती हूँ. इट ग्रूड. And one of the session, the paid session we did was purely for the audience from Germany. So we had a public session in Germany, art therapy के ऊपर. And one of the core you realize here as a startup, you need to find your strength. We knew our strength was art therapy. कोई भी इसको सुनता है तो वो थोड़ा सा हो जाता है, अच्छा art therapy क्या होता है? Everybody is willing to explore this area, or everybody like this fact कि I am going to share my struggles with someone, but not by speaking, but by using a creative medium. और creativity is something जिसको embark आप easily कर सकते हैं. You can drive people, right? So हमें पता था कि हमारे strength creative remedies है और हमें उसी पे रहना है. सो अगर पूरी दुनिया ऑनलाइन मेडिटेशन करवा रही है या ऑनलाइन काउंसलिंग 1-to-1 काउंसलिंग सेशन भी हो रहे हैं, आर्ट थेरेपी इज अवर कोर, जो कि बहुत सारे लोग ऑफर नहीं कर रहे थे. एंड वी राइटली हिट ऑन दैट. और बहुत सारे वी डिड, लाइक आई थिंक we did more than 35 sessions online art, सिर्फ art therapy के session, apart from the other workshops. We started growing. We did our session across Bangladesh, Afghanistan, India, and Germany. So this was where we tasted कि अब अगर कोविड की सिचुएशन ठीक भी हो जाती है, so we know that we have the model where we can work on ground as well, and we can continue to work Mhm. online as well. So झटका लगता है, झटका ज़रूर है. अनसर्टेनिटी सबको फील होती है. ऐसा नहीं होता कि कोई मेंटल हेल्थ के एरिया में काम करता है तो वो इतना प्रिपेयर्ड है कि वो अनसर्टेन सिचुएशन को अवेयरनेस होती है. लेकिन जो कैपेसिटी चाहिए होती है, वो कैपेसिटी बहुत ज़रूरी है कि आपके पास ये कैपेसिटी हो कि आप अनसर्टेन टाइम में रुक के सोच सकें कि मेरे वेज क्या है, ना कि आप बिल्कुल माइंड ब्लॉक हो जाएं कि मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती. सो देयर वाज अ ब्लॉकेज फॉर अ लिटिल वाइल, बट देन वी स्टार्टेड बिल्डिंग ऑल्टरनेट प्रोग्राम्स. उसको हमने टेस्ट किया, हमने उसको जो है उसके अंदर चेंजेस लाए बेस्ड ऑन फीडबैक. And then we started sustaining. Then we saw that corporate was also willing to invest in online session. Major shift आया. Corporates in the beginning were not willing to pay for online session, or they were willing to pay 50% less. So वो जो on ground देते थे उससे 50% less they were paying. But then we saw कि ठीक है,
अब कॉर्पोरेट भी एक्सेप्ट कर रही है. स्कूल्स, we had a new market to enter. Schools badly needed mental health program, creative remedies. We started pitching to them. We started doing paid program through them. न्यू ग्रांट्स केम इन. कोविड के टाइम पे न्यू ग्रांट्स आए. सो अगर हमने इसको टेस्ट भी किया होता कि हमने कोविड में अब तक क्या किया है, वी वर नॉट एबल टू पिच. लेकिन बहुत सारे ग्रांट्स हैं जो पूछ रहे थे कि हाउ यू आर सर्विंग योर कम्युनिटी करंटली, एंड दे वर विलिंग टू इन्वेस्ट इन. सो वी बिल्ड न्यू पार्टनरशिप विद गर्ल्स राइजिंग. वी बिल्ड न्यू पार्टनरशिप, यूएस एम्बेसी का हमें ग्रांट मिला. We built new partnership with European Union. We are currently doing a European Union grant focusing on digital well-being. So ये तमाम चीज़ें वहाँ से आई जब you were in this state. और ये स्टेट तब आता है जब आपने अपना स्टार्टअप शुरू किया है और आपने उस मदद से उस माइंडसेट से शुरू किया कि मुझे इसको सस्टेन करना है. मतलब अल्लाह ना करे कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, सो यू शुड बी प्रिपेयर कि मैं 2 या 3 महीना विदाउट हैविंग अनदर इनकम मैं इसको सस्टेन कर सकती हूँ. सो वी हैड इनफ रिसोर्सेज विद अस. तभी वी वर एबल टू पुट अवर टाइम इन एक्सपेरिमेंटिंग. अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप एक्सपेरिमेंट करें. तो जब भी कोई भी आप स्टार्टअप या इनिशिएटिव शुरू करते हैं, उसको इस माइंडसेट से शुरू करें कि अगर 3 महीने तक पैसे नहीं हुए तो ये सस्टेन हो जाए. और अगर ये गुंजाइश रखते हैं तो फिर कोई भी अनसर्टेन टाइम जब आपके पास आता है तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं. So that's how we sail through COVID time. लेकिन I'm very happy कि this also gave us opportunity to look beyond. हमारा लेंस बहुत वाइडर हो गया. हम अपनी लिमिटेशन से निकले. बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ थे जिसको हमने ब्रेक किया, और बहुत सारे न्यू चीज़ें थे जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया. लेट्स से काउंटरिंग ऑनलाइन हेट एंड वायलेंस, डिजिटल वेल बीइंग. तो वो सारी वो चीज़ें थी जो अगर कोविड नहीं होता और हम रेगुलर उसमें चल रहे होते तो शायद हम इन प्रोग्राम्स की तरफ कभी शिफ्ट नहीं होते. बट कोविड गेव दिस अपॉर्चुनिटी. सो एज अ यंग एंटरप्रेन्योर, एज अ स्टार्टअप लीडर, यू नीड टू कीप इन माइंड कि जब अनसर्टेन टाइम आता है, जब अनस्टेबिलिटी आ जाती है, उसके अंदर हमेशा एक्सपेरिमेंट करने को रेडी रहें. Experiment for free or experiment for money, however it goes for your startup. But do not forget that you have to experiment. It will always bring new products to you. It will always bring new ways to you. Now we have brighter idea. We know कि हम और किस direction में बढ़ने वाले हैं in the परिंदे. But for COVID, we are both thankful and not so thankful. Right. So where stages where it had put a halt to your project, it also gave you opportunities as well. Yes, yes. Right. Okay. So now we're going to move to our next segment, which was about road towards entrepreneurship. And this segment, we're going to discuss in detail about the difference, particularly कि हमारे पास social entrepreneurship क्या है और enterprise क्या होता है. तो if you can maybe start with that, कि social enterprise और entrepreneurship में फर्क क्या है? Is there a distinction between them? Or what are the crucial steps needed to be taken जिसको हम बोलें कि हाँ इसके बाद हम social enterprise की तरफ जा सकते हैं. Okay. So एक चीज़ तो ये कि social enterprise जो है वो entrepreneurship का एक सब branch है. Entrepreneurship is the umbrella. Entrepreneurship is when like you have idea or anything, like you start your own product, you start giving your own products and services. आप entrepreneur हैं, आप अपना खुद का startup करते हैं, अपना खुद का business शुरू करते हैं. जब आपका फोकस इस सर्विस या प्रोडक्ट का हो जाता है फॉर द वेल बीइंग ऑफ पीपल, समथिंग विच विल सर्व पीपल, तो वो सोशल एंटरप्राइज के दायरे में आता है. सोशल, समाजी. सो समथिंग विच विल सर्व पीपल, समथिंग विच इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी एंड फॉर योर पीपल. सोशल Right. एंटरप्राइज का लैंडस्केप पाकिस्तान में बहुत बहुत बड़ा है. और इन लास्ट 2 years we can see the umbrella has opened like anything. At the same time, startup as an entrepreneur का भी जो है वो landscape बहुत वसी होता जा रहा है. Many fundings are coming, many investments are coming, technology based startup ideas are growing like anything. Again, reality यही हो रही है. We are moving towards like artificial intelligence के time पे की world में हम जाते जा रहे हैं. So technology का spend बहुत बढ़ता जा रहा है. Social enterprise के अंदर भी technology element का integration is becoming necessary. So social enterprise, according to me, is when you are co-creating solutions with the community.
or when you are co-creating solution as per the need of the community. So as an Right. entrepreneur मैं कहूँगी कि यार मुझे लगता है कि मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है, आई एम गोइंग टू मेक अ फोन. बट एज एन सोशल एंटरप्राइज मैं कहूँगी कि लोगों को राब्ते में मुश्किल होता है, लोग राब्ता नहीं कर पाते. मैं एक ऐसा फ़ोन बनाऊंगी जिसकी मदद से एट अ लो कॉस्ट लोगों के पास ये सर्विस होगी. सो यू डू समथिंग फॉर द पीपल. आपका जो है किसी Right. सोशल कॉज के साथ अटैचमेंट होता है एंड यू वांट टू ग्रो एंड हेल्प कम्युनिटी टू ग्रो. सो दैट्स द डिफरेंस. जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में इन अ लीगल टर्म देयर इज़ नो सोशल एंटरप्राइज. कॉन्सेप्चुअली सोशल एंटरप्राइज मौजूद है, लीगली देयर इज़ नो सोशल एंटरप्राइज इन पाकिस्तान. लाइक अगर आप कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, आप और मैं इसको रजिस्टर कर, लेट्स से इको टूरिज्म, क्या मैं चाहती हूँ कि हम टूरिज्म को बढ़ाएंगे और इको टूरिज्म होगा कि हम जाके जो है वो सफाई कर रहे होंगे और ग्रीनरी कर रहे होंगे. सो ये एक आइडिया हो गया कि आप कैसे कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं. इसको अगर रजिस्टर करना है तो देर इज़ नथिंग, कोई क्लॉज नहीं है जिसमें आप कहें कि वी आर सोशल एंटरप्राइज एट द मोमेंट. आप एनजीओ हो सकते हैं, आप प्राइवेट लिमिटेड हो सकते हैं, आप सोल प्रोप्राइटर हो सकते हैं. सो लाइक परिंदे कैसे ऑपरेट करते हैं, वी आर रजिस्टर्ड एज प्राइवेट लिमिटेड, but our clause and our policies are of social enterprise. So whenever we present ourselves, we will say that we are registered as we are registered as private limited operating as social enterprise. जब तक कोई लीगल नहीं आ जाती. बट लीगल जो प्रोसीडिंग्स है सोशल एंटरप्राइज की, गुड न्यूज़ इज़ कि दे आर ऑन द वे, दे आर सून गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान. स्टार्टअप्स के लिए कुछ रीसेंट अच्छी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हो रही है. एग्जांपल, स्टार्टअप्स वर नॉट एबल टू रिसीव एक्सटर्नल फंडिंग, इंटरनेशनल फंडिंग, Mhm. but government has introduced new policies where startups can receive those funding, be it a supportive donation amount or a small grant. तो ये एज और ये सारी चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस हो रही है, ये लैंडस्केप बढ़ रहा है, बिकॉज दे सो दैट यंगस्टर्स हैव द पोटेंशियल and youngsters are bringing wonderful ideas both in the area of entrepreneurship and in the social entrepreneurship. So to understand कि ये कुछ current situation है पाकिस्तान के अंदर. Right. And if you can focus, let's say, more on the legal side of it. तो परिंदे जो है वो एक प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे रजिस्टर हुआ एंड वी आल्सो प्रेजेंटेड एज अ सोशल एंटरप्राइज, राइट? बट एक प्राइवेट लिमिटेड के अलावा हमारे पास और कौन सी लीगल टर्म्स हैं या लीगल स्टैंडिंग्स हैं जिसकी बेसिस पे ठीक हम है. किसी सोशल एंटरप्राइज को जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं? So you need to understand कि social enterprise, क्योंकि इसके साथ enterprise का जो है वो नाम लगा हुआ है, तो इसमें आप you earn the money. ठीक है, ये राइट. for social work नहीं है. सोशल एंटरप्राइज राइट. का कॉन्सेप्ट ये है कि इट इज़ समथिंग बिटवीन एंटरप्राइज एंड एनजीओ. एनजीओ ये कहता है कि हम नॉन प्रॉफिट है, हम नहीं कमाएंगे, ठीक है, वॉट एवर वी आर गेटिंग वी इन्वेस्ट फॉर द पीपल, फॉर द कॉज. सोशल एंटरप्राइज में यू अर्न एंड यू लाइक इट्स अ हाइब्रिड वर्जन ऑफ नॉन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट. आप कमाते भी और आप नहीं भी कमाते. एंटरप्राइज या प्राइवेट लिमिटेड इज प्योरली व्हेन यू आर वर्किंग फॉर द प्रॉफिट. सो पाकिस्तान के अंदर अगर आप ऑपरेट करना चाहते हैं एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर, यू कैन रजिस्टर एज अ सोल प्रोप्राइटर एज वेल. काफ़ी लोग ये करते हैं कि वो एज अ सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि इसके अंदर फिर टैक्सेशन के और दूसरे बहुत सारे ये दिस इज एंटायर वर्ल्ड जो कि खुलता जाएगा. सो अगर आपको लगता है कि वी आर अ यंग पीपल या मैं एक पर्सन हूँ या मेरी ऑर्गेनाइजेशन अभी ग्रो कर रही है एंड वी कैन नॉट go into the legality, I would highly recommend go to register as a sole proprietor. सो आप सोल प्रोप्राइटर के तौर पे रजिस्टर करें. उसके अंदर आप इनिशियल फेजेस में टैक्सेशन वाले उस पर आपको थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड में अगर आप कमा नहीं भी रहे हैं, चलो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना, लेकिन दूसरी डॉक्यूमेंट्स इतने हैं जिसके अंदर आपको कोई ना कोई चार्जेस आपका मनी वाइज ज़रूर लगता है. तो अगर आप नए स्टार्टअप हैं, अभी आप सस्टेनेबल उस पर जा रहे हैं, अभी आप इंक्यूबेशन के फेज़ में हैं, तो फिर आप सोल प्रोप्राइटर के तौर पे जा सकते हैं और यू कैन वर्क एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर. लेकिन अगर आपको लगता है कि यू आर अ टीम वेयर यू हैव सम रिसोर्सेज अवेलेबल, देन आई वुड रेकमेंड कि आप प्राइवेट लिमिटेड के उस पे जाएं. एज अ प्राइवेट लिमिटेड के उस पे जब आप जाते हैं, जैसे परिंदे हैं, यू कैन रजिस्टर एज अ प्राइवेट लिमिटेड और फिर आप उसको ऑपरेट अपने पॉलिसीज़ के थ्रू पूरा सोशल एंटरप्रेन्योर या सोशल एंटरप्राइज के मॉडल पे कर सकते हैं. बट व्हेन इफ़ यू रजिस्टर एज अ नॉन फॉर प्रॉफिट, अगर आप उसको एज एन एनजीओ रजिस्टर करते हैं, ऑफ कोर्स हर एनजीओ सस्टेनेबल होता है. They have a different parameters to work. They earn in a different manner.
लेकिन एज अ न्यू एंटरप्राइज अगर आपका काम जो है वो अगर आप प्योरली जो है वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं और आप एनजीओ में जाते हैं तो एनजीओ के पेपर वर्क्स आर ह्यूज. इट्स नॉट वेरी इजी टू गेट रजिस्टर्ड एज अ एनजीओ. It's a very long paperwork and process. So sometimes I also recommend people कि अगर आप sole proprietor के तौर पे start करते हैं then you grow well. Then as per your working you can choose कि अब मुझे as a private limited register करना है या as NGO करना है. Like many people often tell me अभी तक कहते हैं कि यार आप जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कर वो एनजीओ कर लेते हैं. एंड आई टेल देम नहीं, अगर आप बिकॉज आई एम नॉट प्योरली वर्किंग एज अ नॉन प्रॉफिट, वी हैव अ प्रॉफिट मेकिंग एलिमेंट प्रेजेंट एज वेल. जब आप नॉन प्रॉफिट होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ फंडिंग और ग्रांट्स पे हैं. आप नेचुरली यू कैन नॉट चार्ज पीपल, आप उनसे चार्ज नहीं कर सकते. आप ग्रांट्स के बेस पे या फंडिंग केस पे करते हैं. लेकिन जब आप सोशल एंटरप्राइज है तो आप ग्रांट्स भी रिसीव कर सकते हैं, आप चार्ज भी कर सकते हैं. व्हेन यू आर प्राइवेट लिमिटेड उसके केस में भी कुछ स्पेशल ग्रांट्स आते हैं जिसमें आप जो है वो ग्रांट्स भी रिसीव कर सकते हैं और आप ऑफ कोर्स पेड वर्क भी कर सकते हैं. सो ये कुछ सिचुएशंस हैं पाकिस्तान के अंदर जो लीगल उसके ऊपर मौजूद है. या Right. And just briefly, if you can also tell कि what were the steps through which you got परिंदे registered? Basic steps क्या थे जिससे कोई भी अपने social enterprise को जो है वो let's say sole proprietor या private limited के तौर पे register करवा सके? सो गुड थिंग इज कि हमारे पास अभी बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे आ रहे हैं जिनका फोकस यही है, जिनका आइडिया यही है कि वी विल हेल्प young entrepreneur to register their organization. ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में जो है वो इंक्यूबेटेड हैं बोथ इन द इस्लामाबाद एनआईसी एंड कराची एनआईसी. सो अगर मैं स्टेप्स बताऊं, लेट्स से इफ यू आर रेडी दैट यस वी विल लाइक टू गो लीगल, ठीक है, अब हमें लीगल होना है. सो लीगल से मुराद आई विल टेल यू परिंदे ऑपरेटेड एज नॉन रजिस्टर फॉर गुड 2 years. बट उसके अंदर हमारे बहुत सारे चैलेंजेस थे. चैलेंजेस ऐसे थे कि मैं इंटरनेशनल फंडिंग रिसीव नहीं कर पा रही थी. मैं अगर ग्रांट रिसीव कर रही हूँ तो वो इंडिविजुअल मेरे नाम पे आ रहा है, वो परिंदे के उस पर काउंट करवाना बड़ा मुश्किल हो रहा था. कोई लीगल पॉलिसीज़ नहीं थी. जब आप बड़े ग्रांट्स को पिच करना चाहते हैं या आप कोई बड़ी फंडिंग्स को पिच करना चाहते हैं तो वो हमेशा आपसे पॉलिसीज़ मांगेंगे, वो आपसे प्रूफ मांगेंगे रिसिप्ट का, वो आपके एचआर पॉलिसीज़, फाइनेंस पॉलिसीज़. तो ये सारी पॉलिसीज़ एक किसी भी यंग स्टार्टअप में नहीं होती है. लेकिन ये ज़रूरी है कि ये आप शुरू से बनाना शुरू करें कि मेरी एचआर पॉलिसीज़ क्या है, मेरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पॉलिसीज़ क्या है, ये सोशल एंटरप्राइज के अंदर कुछ कोर चीज़ें जो हो. तो जब हमने देखा कि यार ये चैलेंजेस आ रहे हैं, वी सेड नो, नाउ वी वुड हैव टू गेट रजिस्टर्ड. उस टाइम पे पाकिस्तान में एनजीओ की रजिस्ट्रेशन वाज बैन, बिल्कुल बंद थी. सो वी मूव टुवर्ड्स प्राइवेट Hmm. लिमिटेड. प्राइवेट लिमिटेड के उस पर अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं सो आई हाईली रेकमेंड कि किसी भी लॉयर के पास जाने से पहले एसईसीपी सिक्योरिटी एक्सचेंज के वेबसाइट पे जाके ज़रूर पढ़ें. आपको समझ में आएगा कि बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा. जब आप डर जाते हैं ना, आपको लोग डराते हैं और ये बहुत कॉमन फैक्टर है पाकिस्तान में. लॉयर्स तो बहुत ही डराते हैं. नहीं इसमें ये हो जाएगा, नहीं नहीं आप हमें दे दें, आप कहाँ बार बार जाएंगी, नहीं हम ये कर देते हैं. देन दे चार्ज देयर कंसल्टेंसी फीस. Hmm. बट किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए किसी भी का चाहे कोई दुकान भी कोई खोलता है ना तो वो दुकान वाला हमेशा फाइनेंसेस अपने हाथ में रखता है. अगर वो फाइनेंसेस अपने हाथ में Right. नहीं रखता, उसको नहीं समझ में आ रही होती कि मेरी दुकान में रोजाना क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा. तो किसी भी एंटरप्रेन्योर में आप भले अपने आइडिया साइड पे बहुत स्ट्रांग है, आपके एंटरप्रेन्योरल स्किल बहुत स्ट्रांग है, आप फाइनेंसेस में आपको जाना पड़ेगा. आई एम टेरिबल एट मैथ, मैं आई स्टिल हेट मैथ्स. लेकिन जस्ट फॉर माई स्टार्टअप एंड फॉर मी टू बेटर अंडरस्टैंड द पॉलिसी आई हैड टू डाइव इन. आई हैड टू स्टडी, आई हैड टू सिट विद लॉयर्स, आई हैड टू अंडरस्टैंड. क्योंकि जब तक मैं इसमें डाइव इन नहीं करी थी और मैंने किसी और के हाथ में दिया हुआ था, वो बहुत शेकी चल रहे थे. हमारी सिचुएशन बड़ी शेकी थी. कभी हमारे लॉयर्स चेंज हो रहे हैं, कभी हमें समझ नहीं आ रहा कि अच्छा यार आज ये नोटिस आ गया एसईसीपी से, अब क्या करना है, अब इसका क्या मतलब होता है. सो आई रिकमेंड स्टेप बाय स्टेप गो टू एसईसीपी वेबसाइट, read about it. It's very simple. It's like process to get registered. You need very simple documents. Example, आपका कोई ऑपरेटिंग जगह का डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, कोई ऑफिस का, वो आपका घर भी हो सकता है. अगर आप घर में कर रहे हैं तो आप घर के डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकते हैं कि दिस इज़ वेयर वी लिव. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए आपके पास. वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो 3 एंड देन मोर हो सकते हैं. आपके पास एक सिंपल एचआर पॉलिसी होनी चाहिए, आपका लेटर हेड और आपका स्टैम्प होना चाहिए. एंड देन यू नीड टू ओपन अ बैंक अकाउंट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपके पास जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाती है, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू ओपन बैंक अकाउंट. कोई प्रॉब्लम नहीं होती. बैंक अकाउंट आप खुद जाके खोलें, किसी और को इन्वॉल्व ना करें.
And then if you need to carry on, then of course you need a financial side person and a lawyer. But in the beginning, this is something जिसके ऊपर अगर आपकी अच्छी नॉलेज है तो आपके पैसे बहुत बच जाएंगे. वरना आप डर से जो है ना बहुत सारे पैसे दे देंगे कि अच्छा इस एक डॉक्यूमेंट के 5,000 है प्रोसेस के चले ये ले, तो फिर आपको पता चलेगा दैट डॉक्यूमेंट इज जस्ट फॉर 1,500. दैट्स समथिंग विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ कि कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसको फिल करके सबमिट करना है तो SECP उसके चार्जेस आर लिटरली 1,200 और 1,500, लेकिन जब हम लॉयर के थ्रू करवा रहे हैं दे चार्ज 5,000. सो अगर ये वाह. आपको नहीं पता सो देन यू लूज अ लॉट ऑफ मनी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको एक्सप्लोर करना शुरू करें. राइट. राइट. आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था हम सबके लिए. All right, so we're gonna go to our third segment, and now we are gonna discuss the skill set required, yeah, are requisite for us for a young entrepreneur. And perhaps we could start with something very simple. कि जब भी हम एक नया venture start करते हैं, social enterprise start करते हैं या एक enterprise start करते हैं, क्योंकि कुछ टाइम तक हमें जो है वो यही है कि ऑब्वियसली हम जितना इन्वेस्ट करेंगे फॉरेन हमें फॉरेन मिल नहीं जाएगा. तो उस टाइम पीरियड से कैसे गुजरा जाए, उस टाइम पीरियड पे जो डीमोटिवेशन होती है, हाउ टू डील विद दैट डीमोटिवेशन. um, um, that's a very good question. और इसके अंदर दो साइड है. I would like to tell two side to people. एक होता है कि कुछ youngsters young people these days they are starting getting into the ventures purely from the side of money making. So example मैं इस चीज़ में इन्वेस्ट कर लूँ इसमें ज़्यादा पैसा है. It could be crypto or Bitcoin as well, right? बहुत सारे जो लोग हैं वो आजकल इस तरफ जा रहे हैं. तो अगर आपको लगता है मैं इसमें कर लूँ और इसका मतलब है कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, यू आर मनीप्रेन्योर. आप एंटरप्रेन्योर नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट कर राइट. रहे हैं और आपका प्योर पर्पज इज टू अर्न मनी. बट अगर आप कहते हैं कि यार दिस इज अ एरिया जिसके बारे में मैं बहुत पैशनेट हूँ, ये कोई कम्युनिटी का कॉज है जो मुझे बहुत पसंद है, मुझे लगता है मैं इसको प्रोफेशनली करूँ. सो एग्जाम्पल इन माई केस आई न्यू दैट वर्किंग एट दी ऑल्टरनेट टूल्स वॉज माई पैशन थ्रू वॉलंटरिज्म एंड देन मैंने उसको प्रोफेशनल उसमें कन्वर्ट किया. अगर कोई भी सोशल एंटरप्राइज आप शुरू कर रहे हैं वो आपका पैशन है, यू विल सर्वाइव थ्रू दिस टफ टाइम. लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे आइडिया हैं और आपको नहीं पता आपका पैशन क्या है, आप बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाएंगे. सो एग्जांपल मैं कहती हूँ कि यार अब जो है मैं एक आइडिया शुरू करने वाली हूँ कि मैं जो मेरे गांव में फीमेल्स हैं मैं उनको कहूँगी कि वो कुछ बनाएं और मैं उनका जो है वो मार्केट के साथ जो है वो गैप कम करूँगी. मैं इसको मार्केट में उनका हैंडवर्क बेचूंगी. आई विल पे देम. ठीक है, ये एक आइडिया है. आप वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करें. दिस इज अ सोशल एंटरप्रेन्योर. लेकिन आपको आप यू आर नॉट पैशनेट अबाउट इट. आपके पास एक और कोई आइडिया मौजूद है. अगेन जैसे आप कहते हैं कि मैं इको टूरिज्म करूँगा. तो जब आपके पास फोकस एक नहीं है आप बहुत जल्दी डीमोटिवेट होंगे. बट व्हेन यू नो दैट यू आर पैशनेट अबाउट दिस कॉज, यू आर पैशनेट अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और कम्युनिटी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, अगर आपके पास टफ टाइम भी आ रहा होगा यू विल हैव समथिंग टू ड्राइव थ्रू. एग्जाम्पल मैं आई वुड लाइक टू आस्क ऑल ऑफ अस जो यहाँ पे हम मौजूद है 12 लोग, आई वुड लाइक टू आस्क ऑल ऑफ अस के आप रोजाना की जिंदगी में कौन सी एक चीज़ है विच कीप्स यू गोइंग. अगर आपके पास इस एक सवाल का जवाब है और आपके एंटरप्रेन्योरशिप या आपके स्टार्टअप में मैं ये सवाल करती हूँ कि कौन सी एक चीज़ है विच मोटिवेट्स यू टू कीप ऑन गोइंग, और अगर आपके पास इसका जवाब है आप किसी टफ टाइम में डिमोटिवेट नहीं होंगे. लेकिन अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है, अगर कोई मुझसे आज भी पूछे कि व्हाट मोटिवेट्स यू टू कीप परिंदे गोइंग, अगर मेरे पास इसका जवाब नहीं है तो परिंदे तो कब का बंद हो गया होता. I need to have answer to this one question. Every entrepreneur need to have answer to this one question. What keeps you motivated to keep going? कौन सी चीज़ है? वो कोई छोटी चीज़ भी हो सकती है. It could be as simple as कि जब मैं उन लोगों के पास जाती हूँ and when I see them smiling, it could be simple. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एक चीज़ है which is driving you, which is keeping you going. So अगर आपके बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, and this is my personal experience, I teach at IOBM CBM in the entrepreneurship department and social leadership degree. So मैं वहाँ पे भी देखती हूँ कि जब यंग स्टूडेंट्स के पास बहुत आइडियाज़ होते हैं, इसलिए जब वो 4 साल की डिग्री करके भी निकलते हैं ना तो वो किसी एक आइडिया पे नहीं होते कि इस 4 साल की डिग्री के बाद ये मेरा स्टार्टअप होगा. बिकॉज दे हैव सो मेनी आइडियाज, दे आर नॉट फोकस.
तो जब आपके पास एक चीज़ पे फोकस है तो आप उस मुश्किल वक्त से निकल जाते हैं। लेट्स से अगर आपके पास एक चीज़ पे फोकस है और कोई मुश्किल वक्त आ गया है, डीमोटिवेशन हो रही है, you need to start thinking creatively. You need to take a pause. आपको रुकना है और आपने रिफ्लेक्ट करना है. Do not give up. आपने कोई हम्म, alternate road map निकालना है. You will have to reflect. ये कोई फास्ट प्रोसेस नहीं है. दिस इज ए ऑन गोइंग प्रोसेस. वी ऑल आर लिविंग इन दिस प्रोसेस. सो इस प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है. ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जो चलता रहेगा. कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे आप कहेंगे कि अब मेरा मकसद जो है अचीव हो गया, अब मैं बिजनेसमैन बन गई या बिजनेस वूमेन बन गई. ऐसा नहीं है. इट्स अ प्रोसेस. एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस. इनोवेशन इज द नीड. जैसे दुनिया बढ़ रही है, लैंडस्केप चेंज हो रहा है, इनोवेशन इज द नीड. एग्जाम्पल परिंदे में करंटली वी हैव टू ब्रिंग द एलिमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम अब जब भी किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर पिच करते हैं, सो एवरीबडी इज आस्किंग कि इसमें टेक्नोलॉजी का एलिमेंट कहाँ पे मौजूद है. सो आपको देखें कि अगर मैं इस सिचुएशन में घबरा के बैठ जाऊं कि इसका मतलब ये है कि आने वाले 3 से 4 साल में परिंदे की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो मैं तो वहीं रुक जाऊंगी. लेकिन मुझे ये सोचना है कि यार ये एक चैलेंज आया है. इनोवेशन, आई नीड टू ब्रिंग इनोवेशन. सो वी आर करंटली ब्रेनस्टॉर्मिंग कि हाँ किस तरीके से टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जा सकता है. सो आप देखें कि जब भी मुश्किल वक्त आते हैं तो इनोवेशन आती है. जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो या तो आप बिल्कुल छोड़ देते हैं, या आप कहते हैं ना, या आप सवर जाते हैं या आप निखर जाते हैं. इज हाउ यू रिसीव इट. सो अगर किसी को अपने स्टार्टअप में डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा फेस हो रही है, सो आई फील कि उनको अपने कॉज से दे आर नॉट इनफ इन लव विद देयर कॉज. अगर आपको अपने कॉज से बहुत यू आर अटैच टू इट, यू नो कि इसका इम्पैक्ट क्या निकलता है, तो आप डीमोटिवेट नहीं होंगे, आप ऑल्टरनेट वेज निकालेंगे. राइट, राइट, आई थिंक इट्स वेरी वेल सेड कि आप डीमोटिवेट नहीं होंगे, आप ऑल्टरनेट वेज निकालेंगे. राइट. सो बिल्डिंग अपॉन दैट, हम जिस तरह से पैशन की बात कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स स्टार्ट में जो है वो द रीजन आई एम गोइंग बैक टू दिस आइडिया इज क्योंकि काफी लोग जो है वो काफी यंग एंटरप्रेन्योर्स इस चीज पे आके रुकते हैं कि जब हम स्टार्ट में हम आई एम पैशनेट, लेट्स से मैं पैशनेट हूँ, मैं एक एंटरप्राइज सोशल एंटरप्राइज स्टार्ट कर रहा हूँ, बट उसमें वॉलंटियरिज्म का रोल क्या होता है? कुछ टाइम तक ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना अर्न, लेकिन इवेंचुअली वो मेरा एक माइंडसेट होता है कि मुझे इसको सस्टेन करना है. बट बिफोर दैट इफ यू टेक ए स्टेप बैक और हम कुछ और साल पहले चले जाएं, तो वहां से वॉलंटियरिज्म का रोल क्या होता है टुवर्ड्स क्रिएटिंग एंड देन सस्टेनिंग सोशल एंटरप्राइज? अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट डिस्कशन ऑन दिस, मैं एक और बात शेयर करना चाहूँगी कि काफ़ी स्टार्टअप्स हैं जिनको मैंने ऐसे देखा है, इंक्लूडिंग परिंदे, कि जो मेरा मेन कॉज है दैट इज़ मेंटल हेल्थ. But as a secondary course, as an intersectional course, I work for peace building as well. So बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे भी होते हैं जो दो प्रोडक्ट्स या दो सर्विसेज रखते हैं. तो अगर आपको लगता है कि लेट्स से मेरा जो प्राइमरी फोकस है इज़ टू वर्क फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन मैं एक सेकेंडरी प्रोडक्ट भी रखूंगी विच इज़ अ मनी मेकिंग, तो आप ऐसे अप्रोचेज और ऐसा अपना जो है वो अपना प्लान बी भी बना सकते हैं. कि अगर मुझे पता है कि अभी अगर लोग थेरेपीज की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन पीस बिल्डिंग की कंसल्टेंसीज बहुत आ रही है, तो चलो मैं उस पर पिच करूंगी. तो आप अपना टू वे प्लान ज़रूर बना के रखें. अक्सर स्टार्टअप्स में ये कॉमन प्रैक्टिस है विच इज़ फाइन. सो जिस पर आप कहते हैं कि हमारा मेन फोकस तो ये, मेरा प्राइमरी वर्क ये, लेकिन आप कुछ सेकेंडरी प्रोडक्ट या सर्विसेज भी रखते हैं जिसको आप बेच सकें अगर कोई मुश्किल वक्त आ रहा है और आपका मेन प्रोडक्ट नहीं चल रहा, तो ये भी एक प्रैक्टिस हो सकती है. कमिंग टू वॉलेंटरिज्म, सो मेरी लाइफ में तो सब वॉलेंटरिज्म, मतलब द मैजिक वॉज ब्रॉट विद वॉलेंटरिज्म. मुझे सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे यहाँ ब्लेसिंग लगती है वो ये लगती है कि हमारे ओवरऑल पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम में करियर काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट अभी तक डेवलप हो रहा है. किसी भी इंस्टीट्यूशन में वो अब तक बिल्ट इन नहीं है. Volunteerism is a wonderful opportunity for you to taste where your passion lies. ये सबको नहीं मिलता. यू आर ब्लेस्ड इफ़ यू हैव अपॉर्चुनिटी. एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई कहता है कि यार आप कम्युनिटी के लिए आके एक सेशन करा दें, तो अगर मैं वैसे लेट्स से अगर मैं वैसे आर्ट थेरेपी का सेशन नहीं करा सकती, तो वहाँ पे मेरे पास चांस है, मैं करा सकती हूँ. मैनी बॉयज़, मैं उनको हमेशा कहती हूँ, मैं देखती हूँ कि जब हमारे कैंप्स में आपने नोट किया कि मेल स्पीकर्स सिर्फ मोटिवेशन तक पे क्यों रह गए, वो क्यों कोई फंक्शनल वर्कशॉप्स नहीं कराते.
Why can you not encourage any engineer or any software developer to come and have a workshop के आप young लोगों की skill develop करेंगे? So maybe any software engineer can realize कि मैं तो पढ़ाने में ज़्यादा बेहतर हूँ, तो I can go for teaching in university. लेकिन ये पर्सपेक्टिव, ये नैरेटिव हम बिल्ट ही नहीं कर रहे. हम वॉलंटरिज्म के अंदर भी हमने अजीब सा जेंडर बायसेस ले आए हैं, या जेंडर लेंस है कि जब भी कोई वर्कशॉप्स करानी होती है तो मैं देखती हूँ कि पता नहीं नेचुरली हम कहते हैं कि कोई फीमेल स्पीकर, why can't a male speaker or can do like you know Hmm. functional workshops. और आप सोचो इसके Right. जरिए कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है. एग्जाम्पल व्हेन आई वाज इन स्वीडन, and I in my Sweden fellowship they introduced design thinking. ठीक है. Now I wanted to taste design, like you know implement that the same module here. मुझे इसको implement करना था. We had a module of breaking limiting belief. I wanted to implement it here. वॉलंटरिज्म से क्या फ़ायदा है कि लेट्स से मैंने गाइड्स को कहा, मैं लोकल गाइड्स के पास गई, मैंने कहा आई एम अवेलेबल टू रन अ सेशन, वो इस थीम के ऊपर है, तो अगर आपका कोई भी एरिया इस पे फॉल करता है प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट. या मैंने कहा कि यार चलो मैं एक ओपन फ्री पब्लिक वर्कशॉप कर देती हूँ. तो जब आप वॉलंटरी काम करते हैं, जब आप फिलैंथ्रोपिक उसमें आ जाते हैं, आप आपके पास ये एक्सपेरिमेंट के चांसेस मिल जाते हैं. आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि यार मैं एक पहली बार वर्कशॉप कराने वाली हूँ ब्रेकिंग लिमिटिंग बिलीफ एंड आई एम चार्जिंग ₹1000. बहुत बहुत कम स्केप है कि लोग आएंगे. सो मुझे लगता है कि वॉलंटरिज्म के जरिए आपके पास बहुत अच्छा एक बहुत बढ़िया सा एरिया मिल जाता है जहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं. एटलीस्ट इन माई केस आई वॉज एबल टू फाइंड माई ट्रू पैशन थ्रू वॉलंटरिज्म. आई न्यू दैट आई एम फॉर पीपल, आई हैव टू वर्क फॉर पीपल विद इन द पीपल. और वो तभी मुमकिन हुआ जब मैं वॉलंटरिज्म में स्टेप इन हुई. सो दूसरे लोगों को भी, स्पेशली गाइज, लाइक यू नो मेल पोर्शन ऑफ द कम्युनिटी, आई हाईली रेकमेंड कि अगर आप टेक्निकल भी हैं तो आप एक बार सिर्फ इसको ट्राई करके देखें कि यार मुझे किसी और फील्ड में इंटरेस्ट है, लेट मी गो एंड डिलीवर अ सेशन एज इन अ वॉलंटियर कैपेसिटी. मे बी यू फाइंड आउट कि आपने जो पढ़ा है वो आपका पैशन है ही नहीं. Your passion lies in something else, and you can create more wonders. And we have so many examples in our communities. Like, you know, someone studied marketing but doing wonderful in mental health. Someone studied dentistry but doing wonderful as a motivational speaker. We have so many examples present. But वो कहाँ से आया? जब हमने पहला चांस लिया कि चलो टेस्ट करते हैं, चलो ये करके देखते हैं. So I really believe कि volunteerism is one of the wonderful way to find your passion. Right. Perfect. It actually makes sense कि passion से पहले एक step हमारे पास volunteerism का दिन आ रहा है, and then we jump into passion, followed by of course एक चीज पे focus करना, and then of course reaching to our goal which is the social enterprise. But during all this entire process हमारे पास leadership और management skills का क्या role है? And I think that would be our second last point during this entire discussion कि how do you lead this and how do you manage this as well during your in your life and as well as manage the team as well. दैट्स अ वेरी क्रूशियल थिंग. बहुत सारे स्टार्टअप सक्सेसफुल सिर्फ इसलिए नहीं होते क्योंकि लीडरशिप मिसिंग होती है, या लीडरशिप से ज़्यादा टीम मैनेजमेंट की कैपेसिटीज मिसिंग होती है. सो पर्सनल लेवल पे और उस पर भी मैं बताऊंगी. जब आप बहुत पैशनेट होते हैं ना किसी चीज़ के लिए, सो यू आर रेडी टू इन्वेस्ट 24/7. It's very similar to when you fall in love, right? You like to talk to that person 24/7. So जब आपका आइडिया कोई ऐसा पैशनेट काम आप स्टार्ट करते हैं तो आपका 24 घंटे आपके दिमाग में वो चल रहा होता है. So when परिंदे started, so all the time, every day I was just about कि अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, meetings. That's where you can drain your energy. So when it comes to management, you need to find a balance. You need to divide your hours. You always need to keep research time. जब भी कोई business बहुत आगे बढ़ने लगता है, आई हाईली रेकमेंड, और मैं खुद, मेरी अपनी ये प्रैक्टिस है कि मैं अपना लर्निंग टाइम ज़रूर रखती हूँ. सो एग्जांपल अगर मैंने कहा कि यार मैं महीने में एक कोर्स या एक वर्कशॉप ज़रूर ऐसी अटेंड करूँगी जिसमें मैं पार्टिसिपेंट हूँ, तो द प्रोसेस ऑफ लर्निंग शुड कीप गोइंग. ये किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. अगर आप दूसरी साइड पे ही खड़े रह जाते हैं ना, आपके पास अनलर्न और रीलर्न की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है. और बहुत दफ़ा आपको समझ में आता है कि आपके एंटरप्रेन्योर प्रोसेस में अनलर्न करना और रीलर्न करना इज़ द की टू सक्सेस. सो ये टूवर्ड्स Hmm. पर्सनल साइड है कि बैलेंस ज़रूर रखें. ये ये जो है वो ये वाला बैलेंस भी ज़रूर रखें कि जहाँ पे आप
जो है वो अपना टाइम रख रहे हैं कि यू आर क्रिएटिंग, यू आर रिसीविंग इंफॉर्मेशन एंड यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन. सो ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन, सबका स्टांस बहुत डिफरेंट हो सकता है. मेरा पर्सनल स्टांस ये कि आई वांट टू पास द लेगेसी. आई डोंट वांट टू होल्ड एवरीथिंग टुवर्ड्स मी. So my leadership style is very participatory, where I like to divide the task, where I like to pass on things to other people. So for any reason in future I'm not able to continue, or I'm not here, someone is there to carry on the work. Someone is there. So इस लीडरशिप स्टाइल को हम कहते हैं creating local leaders or creating more leaders. So my personal leadership style is towards creating more leaders. My approach of programs in the Parinde is also same. We aim to create more leaders. We want to pass on the ownership. We don't want to keep everything towards our side. And I think कोई अच्छा leader होता भी है कि after some time you have to create more leaders as a backup. But when it's in the beginning, in the like in your work, when it's in the beginning, as a leader you need to as a leader you need to have a very good command on your work. जब भी Right. आपका कमांड या आपका नॉलेज अच्छा नहीं है ना, तो ऑल्टरनेट व्यूज आके उसको चेंज कर सकते हैं. एग्जांपल मैं कहूँ कि शानल ने ये जो तुम आइडिया करो ना, आई थिंक इसको ना करो, ऐसे कर लो. तो अगर आपका अपने इस पे नॉलेज नहीं है ना, यू विल बी डाइवर्टेड वेरी इजीली. और ये बहुत सारे यंग स्टार्टअप्स के साथ होता है. उनका जो आइडिया होता है उसको लोग शेप कर करके कुछ और कर देते हैं. तो वो जो पैशनेट जिस बारे में थे, जिससे उन्होंने शुरू किया था, अब उस आइडिया ने शेप ले ली है किसी और चीज़ की. और तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आपका अपना रिसर्च वर्क कितना स्ट्रॉन्ग है व्हेन यू आर स्टार्टिंग. अगर आपका रिसर्च वर्क स्ट्रॉन्ग है, एज अ लीडर यू आर वेरी यू आर श्योर अबाउट व्हाट यू वांट टू डू, सो आपको शेपिंग मिलेगी, लेकिन आपका आइडिया बिल्कुल ही कुछ और नहीं हो जाएगा. आपके आइडियाज़ को लोग फर्निश करेंगे, पॉलिश करेंगे, उसको उसका ढांचा बदल के नहीं रख देंगे. As a leader, it's also very important for you to have this flexibility. Um, फ्लेक्सिबिलिटी के कभी ये चलेगा कभी नहीं चलेगा. फ्लेक्सिबिलिटी टू टेस्ट कि इसको मैं अलग तरीके से करके देखूं, मेरा रोड मैप चेंज हो सकता है. ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है. अगर आप बहुत रिजिड हैं इन योर लीडरशिप, वेरी रिजिड, रिजिड से मुराद है आप अपने व्यू पॉइंट्स को या अपने तरीक़ेकार को छोड़ने को तैयार नहीं हैं. आप ग्रो करेंगे लेकिन आप बहुत लिमिटिंग कैपेसिटी में ग्रो कर रहे होंगे. बट वेन एवर यू आर फ्लेक्सिबल, यू आर ओपन टू आइडियाज़, यू आर ओपन टू लिसन टू अदर पीपल, यू आर ओपन टू पिक अप फ्रॉम अदर पीपल, दैट्स वेयर यू हैव अ वंडरफुल स्किल ऑफ को क्रिएटिंग. आप उसको मर्ज इंटीग्रेट करके को क्रिएट कर सकते हैं. और एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर एक जो स्किल है जो बहुत ज़रूरी है, इज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल नीड. दैट्स द बेसिक. सो अगर मैं सिर्फ एंटरप्रेन्योर हूँ तो मैं कहूँगी कि ये मेरा स्किल है, ये मुझे मार्केट में फेंकना है, मैं ये डिमांड को पूरा करूँगी. लेकिन अगर एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर आई नीड टू अंडरस्टैंड कि कम्युनिटी को. तो ऐसा तो नहीं है कहीं पे कि कोई कहता है कि हमें पानी की ज़रूरत है और मैं कहूँ नहीं नहीं आपको तो पेप्सी ही पीनी पड़ेगी क्योंकि मुझे पेप्सी, राइट. पर मुझे नहीं, आई नीड टू अंडरस्टैंड कि नहीं उसको पानी की ज़रूरत है, मैं पानी कैसे दूसरे तरीक़ों से पहुँचा सकती हूँ. So इसको हम emotional intelligence भी कह सकते हैं. To have this side where you are able to place yourself at other people's shoes and you understand कि उनकी need क्या है. Yeah. Right, right, perfect. I think this leads us to our last question, which is basically to summarize what we have discussed. Or उसके अंदर if you can just give us a few steps, बहुत ही short steps जिसके through जो है वो एक successful social enterprise की तरफ हम लेके जा सकते हैं. So number one is to have a very strong research work. आप क्यों करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप कैसे करना चाहते हैं, who what why. ठीक है, आपके पास इसके सवाल होने चाहिए. मैं आपको एक मज़े की एक्टिविटी बताऊंगी जो कि आप एज एन असाइनमेंट ले सकते हैं. और ये मेरे साथ भी हुआ था व्हेन आई वाज अगेन इन स्वीडन. सो दे आस्क्ड मी कि 100 सवाल लिखो जो पॉसिबल 100 सवाल कोई पूछ सकता है परिंदे के बारे में. सो 100 क्वेश्चंस मुझे सवाल लिखने थे. इट कुड बी वेरी सिंपल, परिंदे कैसे स्टार्ट हुआ, 5 साल के बाद आप क्या करना चाहते हैं, आर्ट थेरेपी क्या होती है. I can reduce it for you कि चलें try to write 25 questions.
आपने जब वो 25 सवाल पॉसिबल आइडेंटिफाई कर ली ना कि कोई भी थर्ड पर्सन जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुनेगा तो कौन से पॉसिबल 25 क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, स्टार्ट प्रिपेयरिंग रिस्पॉन्सेज फॉर दैट इज़ योर रिसर्च। सो अगर आपने सवाल नहीं सोचे होते ना कि लोग, तो आपको ये नहीं पता कि इसको सुनते हुए एक और ह्यूमन का ब्रेन कैसे वर्क कर सकता है और क्या पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो योर रिसर्च शुड बी वेरी स्ट्रांग। इट्स नॉट लाइक कि एक Right. दिन मैं उठी और मैंने कहा कि यार मुझे फूल बनाना बहुत पसंद है तो अब मेरा कोई स्टार्टअप होगा जो कि जिसमें मैं फूल डिली, नहीं, आपने सोचना है उसमें क्या होगा, उसमें चैलेंजेस क्या है, कम्युनिटी की नीड क्या है, मैं इसको डिलीवर कैसे कराऊंगी, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा होगा, इसको ग्रो कैसे करूंगी। मैं गिनना चाहूँ तो मोर देन 25 क्वेश्चंस अभी टिप्स पे आ जाएंगे किसी भी आइडिया पे ना। Right. सो आपको जो है वो क्वेश्चंस पूछना ज़रूरी है खुद से, बहुत ज़रूरी है। अभी भी जब भी हमारा कोई नया प्रोग्राम शुरू होता है तो वन ऑफ द प्रैक्टिस आई फॉलो इज़ टू आस्क क्वेश्चन। मैं पॉसिबल क्वेश्चंस लिखती हूँ कि अगर हम ये किसी डोनर को पिच कर रहे हैं तो कौन से क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं, उसकी मदद से आप प्रिपेयर करते हैं। रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Number two is to know कि does your passion lies in this thing or you purely wants to earn money from this idea. So अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ये काम सिर्फ इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें पैसा है, that is the entire different game. Then you need to work कि इसमें पैसा कितने टाइम तक है, इसमें कौन सी इनोवेशन लाने की ज़रूरत है। इफ़ यू आर वर्किंग के मैं जो है पैशनेट हूँ इस आइडिया के बारे में, देन यू नीड टू आस्क कि आप कब तक इसमें पैशनेट रहेंगे, कौन सी चीज़ें जो आपको मिलती रहेगी तो आप पैशनेट रहेंगे। सो एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि यार जब लोग आते हैं मेरे सेशन में एंड दे आर एबल टू एक्सप्रेस, ये दिस इज समथिंग विच कीप्स मी गोइंग। सो इसका मतलब है कि अगर किसी पॉइंट पे मेरे सेशन ऐसे हो जाते हैं जिसमें पीपल आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, आई वुड नॉट बी मोटिवेटेड इनफ। सो मुझे वो की पता होनी Right. चाहिए कि कौन सी एक चीज़ है जो कि विच कीप्स मी गोइंग। यू नीड टू नो योर स्ट्रेंथ, व्हाट पुट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर पीपल। अगर एक आइडिया 100 लोग कर रहे हैं, आप भी वही आइडिया लेके आ रहे हैं, व्हाट इज़ डिफरेंट, व्हाई पीपल विल कम टू यू। सो आपका स्ट्रेंथ क्या है, you need to find your strength, you need to know कि ये मेरा strength है और this will keep me going, and then find like-minded people. It's very easy for a solo entrepreneur easily to get exhausted or even for the team to get mind blockage. तो अगर आप 2 लोगों की टीम है, 3 लोगों की टीम है या आप सोलो हैं, with the time you should have aimed कि I will create more leaders, I will have team, ताकि डाइवर्सिटी आए, आइडियाज़ की डाइवर्सिटी आए, लीडरशिप की डाइवर्सिटी आए। वन ऑफ द न्यू रिसेंट टर्म इज को लीडर। सो स्टार्टअप्स हैं जो कहते हैं कि आई एम फाउंडर और फिर अपनी टीम को वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं एज अ को लीडर। दैट्स अ वंडरफुल आइडिया टू मोटिवेट समवन और टू गिव अ लीडरशिप Mhm. पोजीशन टू समवन Right. एज वेल। सो नॉट दैट कि नहीं सोनल फाउंडर है बस सोनल ही फाउंडर है, बाकी सारे तो बस ऐसे ही टीम में, but to tell कि नहीं you are co-leaders, you have the equal space to give a say or to give idea or bring innovation. So ये कुछ बेसिक चीज़ें which keeps me going and which I will suggest कि दूसरे लोग भी follow कर सकते हैं। Right. So I think that's great. I think it summarizes everything that we have discussed so far. Now we're gonna go towards a question that I have received so far, and some of the questions are actually already here in the chat box. So what I'm gonna do is I'm gonna read those questions, and if you have answered them already, then then we can simply leave them, or Joe, you think it needs to be answered right now, we can of course discuss them in detail. So the first question was from Vadim Heather. What is the financial muscle of Parinde, and the what is the annual turnover? So our annual turnover is not fixed. Let's say it totally depends on how many grants we are able to conceive. So let's say if I'm able, like let's say I can tell that last year we were able to receive several small grants, but again you have to understand कि grants का nature क्या है. So are you earning through those grants? या आपने पूरा पूरा ग्रांट एग्जॉस्ट करना है। बहुत सारे ग्रांट ऐसे होते हैं जिसमें आपको पूरे पूरे पैसे खर्च करने होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ग्रांट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक्सपेरिमेंट की गुंजाइश होती है, आप प्रोटोटाइप कर सकते हैं, आप न्यू तो उसमें इसमें यू कैन सेव मनी फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। सो इट्स वेरी डिफरेंट। And as I explained, right now in current capacity, we are a lot of finances are coming through grants. We are growing. Like let's say we partnered with Girls Rising. We did US Embassy project. Now we are doing European Union. We are moving towards US aid. So a lot of funding is coming from the grants. और इसका एक मेजर रीज़न ये भी है कि people here have such a strong stigma towards mental health that they are not ready to invest money in that.
बट एट द सेम टाइम जब हम सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, सो वी डू कॉर्पोरेट सेशन विच ब्रिंग्स अस मनी, जिससे हम अर्न करते हैं, जिसको हम आप कह सकते हैं कि बेचते हैं. सो चाहे वो ड्रम सर्कल हो गया, हमारे म्यूजिक थेरेपी के प्रोग्राम, या वो आर्ट थेरेपी है, या माइंडफुलनेस सेशन है. सो दीज आर द 2 मॉडल्स जिसके थ्रू हम अर्न कर रहे हैं. Right. I think this answers the question very well. We have two questions जिनको मैं एक साथ कहने वाला हूँ ताकि हमारे पास, because I think वो दोनों के आंसर एक साथ हो सकते हैं. So the first question is that since you have also worked in the Jamaati Institute doing camps and working with youth, and now sometime you have been working to, now you are working with to establish yourself as a corporation as well. Um, all right. So what differences you found among the audience of these two organizations? I think जो different organizations की यहाँ बात हो रही है वो है Jamaati institutions, that Jamaati youth that you have worked with, and the corporate sector that you are working in right now. And the second question is, of course, a lot of times the youth are not very much attracted to Jamaati activities. So how to make those activities very attractive, or simply to put it generally, अगर हम सिर्फ उसको जमात के लिए limit ना करें, how to attract an audience, Yeah. basically. These are the two I, questions. Then yeah. we move. I would like to say something here कि हम सब में एज अ ह्यूमन कंप्लेन की बहुत आदत है. फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि यार वॉलंटरी वर्क तो इतना अच्छा होता ही नहीं है. यू विल हैव टू जंप इन टू मेक इट एक्साइटिंग. अगर आपको लगता है कि यू हैव आइडिया, जंप इन एंड मेक इट एक्साइटिंग. मैं बहुत प्राउडली एक बात कहती हूँ कि वी आर मूविंग इन अवर कम्युनिटी, वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रोफेशनल वॉलंटरिज्म. दैट्स अ वेरी ह्यूज एरिया. एंड व्हेन आई से प्रोफेशनल वॉलंटरिज्म, इसका मतलब ये कि अगर मैं जुगनू की बात करूँ जो कि 2013 में था, जुगनू में कोई भी मॉड्यूल ऐसा नहीं था जिस पे किसी ने कहा कि अच्छा यार तुम आर्ट पढ़ा देना, तुम डिजिटल स्टोरी टेलिंग पढ़ा देना, तुम एवरी मॉड्यूल वाज रन थ्रू 3 to 4 टाइम्स. ये प्रोफेशनल वॉलंटरिज्म, जहाँ पे मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि तुम पढ़ा देना, मैंने कहा मुझे ऑब्जेक्टिव बताओ, ये कैसे अचीव होगा, इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं. We are fortunate that we have that professional volunteerism present in our community in so many ways. सो कॉर्पोरेट के उस पर भी मैं जब जाती हूँ ना, तो मुझे एक एज फील होता है. एंड आई एम श्योर सो मेनी ऑफ अस कैन फील कि क्योंकि मैंने वो प्रोफेशनल वॉलंटरिज्म या मैंने वो कम्युनिटी वर्क एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो अक्सर मैं जब कॉर्पोरेट में बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काम तो हम ऑलरेडी अपनी कम्युनिटी में कुछ साल पहले कर चुके हैं. ये मेरा एक्सपीरियंस है. मैं बहुत एज फील करती हूँ. मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत पॉलिश्ड और बहुत फर्निश्ड फील करती हूँ बिकॉज ऑफ माई वॉलंटरी एक्सपीरियंस. और बहुत सारी चीज़ों में, चाहे वो लीडरशिप लेना है, चाहे वो आइडियाज़ है, चाहे वो डॉक्यूमेंट बनाना है, लेसन प्लान बनाना है, एज़ पर माय एरिया, मैं इन सारी चीज़ों में बहुत पॉलिश और बहुत फर्निश महसूस कर रही होती हूँ बिकॉज ऑफ Right. वॉलेंट्री एक्सपीरियंस. जब हम वॉलेंट्रिज्म में एक जो मैं बात कहना चाहूँगी वो ये कि जब हम डर जाते हैं. एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो व्हाई डोंट यू डू, क्या नाम था जिन्होंने सवाल किया, वसीम? This question was by Zahra Ladani. अच्छा ज़ारा, तो मैं कहूँ कि Yeah. चलें आ जाएँ, लेट्स डू, आप मेरे साथ कैंप करें और हम पढ़ेंगे, और व्हाई डोंट यू मेक अ लेसन प्लान और उससे मुझे रिव्यू करा दो. बहुत सारे वॉलंटियर्स वहीं ड्रॉप हो जाते हैं, कहते नहीं नहीं क्या लेसन प्लान बनाना, मुझे नहीं पता. आप सीखेंगे Hmm. कैसे? आपको तो फ्री मेंटोरिंग और कोचिंग मिल रही है वॉलंटरी के थ्रू. आप राइट, सीखो अक्सर ये सोचा जाता है कि हमारे पास हाँ, वॉलेंट्री हो रहा है तो आखिर हम अपना बस टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम लोग से ज्यादा एग्जैक्टली मेहनत नहीं कर रहा उसके अंदर. हाँ. और अगर आपका वॉलंटरी का एक अनफॉर्चुनेट पर्सपेक्टिव ये है कि हम ये सोचते हैं मज़ा आएगा, हल्ला गुल्ला होगा. हर प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होगा, हर प्रोजेक्ट का नेचर डिफरेंट है. सो अगर मैं आर्ट से रिलेटेड करवा रही हूँ, कोई मेला करवा रही हूँ, वहाँ आपकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है. लेकिन अगर एक ऑल्टरनेट एजुकेशनल कैंप हो रहा है या एक कैंप है जिसके बहुत स्पेसिफाइड पर्सपेक्टिव है, वहाँ पे आप इस उम्मीद से आ रहे हैं कि यहाँ सिर्फ डांस होगा, म्यूजिक होगा, मुझे मज़ा आना चाहिए, देन आप अपने हाथों से अपना एक्सपीरियंस खराब कर रहे हैं ना. सो ये डिफरेंस है. और यूथ को आप कैसे ला सकते हैं, दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन. आप देखें कि वो यूथ जो यूनिवर्सिटीज़ में लग जाती हैं और उनको अपना एक्सपीरियंस बेहतर करना होता है, दे क्रेव फॉर प्रोग्राम्स जहाँ पे वो एज अ असिस्टेंट आ सकते हैं, को फैसिलिटेट आ सकते हैं, या राइट. इवन लॉजिस्टिक टीम में आ सकते हैं. सो यू नीड टू, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर अवर इंस्टीट्यूशंस टू हिट के हम किस तरीके से सोशल इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट ला सकते हैं, हाउ दिस वॉलंटरिज्म कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू सोशल इंटर्नशिप्स, ताकि ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी वैल्यू ऐड करे. पाकिस्तान का लैंडस्केप जैसा है, तो हर दफ़ा वॉलेंट्री एक्सपीरियंस काउंट नहीं हो रहा होता, ऐसा बिहेव होता है कि अच्छा ये तो वॉलेंट्री.
ये हम अपनी कम्युनिटी में जहाँ हमें पता है कि नहीं वो कैंप था, लेकिन वो कितना फर्निश कैंप था, लेकिन आउट ऑफ द कम्युनिटी लोग उसको अक्सर नहीं समझ पा रहे होते, क्योंकि उनके यहाँ वॉलंटरिज्म का कॉन्सेप्ट इज़ वेरी लिमिटेड। कपड़े बांट देना, किसी को खाना खिला देना, सफाई कर देना। तो हम उनको अगर डोनेशन। एक्सप्लेन भी कर रहे होते हैं ना, तो मुश्किल होता है। तो वहीं पे मुझे लगता है कि अगर अवर इंस्टीट्यूशन स्टार्ट marketing as a social internship program which will add professional value to youngsters, so I think बहुत सारे youngsters के लिए एक वो shining point होगा to enter in some like some sort of age which जो कि उनके उसमें ऐड करे। So that's one of the idea which I can give के इस तरीके के इनिशिएटिव आने चाहिए। ये माइंडसेट डेवलप होने में टाइम लगेगा, जहाँ पे वॉलेंट्री एक्सपीरियंस को भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के तौर पे काउंट किया जाए। पर जब तक ये डेवलप नहीं होता, सो कैन वी यूज सम ऑफ द वर्ड्स विच आर वेरी चार्मिंग। सो एग्जांपल, जब हमने परिंदे स्टार्ट किया, जैसे ही मैं थेरेपी कहती थी, लोग डर जाते थे, कहते थे ये लेबल लगा रही है, पागल बोल रही है। पर जैसे ही मैंने उनको बोलना शुरू किया, वी विल एक्सप्रेस और एक्सप्लोर अवर सेल्फ थ्रू आर्ट्स, रीवर्ड कर दिया, दे वर ओके विद इट। सो अगर आप वॉलेंट्री को सोशल इंटर्नशिप का नाम दे दें या इस तरीके के और क्रिएटिव टाइटल आ सकते हैं, सो आई थिंक मैनी यंगस्टर वुड बी विलिंग टू इन्वेस्ट देयर टाइम। राइट राइट, आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। और मुझे लगता है यहाँ पे एक सोशल एंटरप्राइज का एक आइडिया आपने पिच इन कर लिया ऑलरेडी, that a lot of people that who are present here can actually use as well. We have two more questions, and both the questions are related to financial sustainability. तो मैं उन दोनों को again एक साथ ही read कर लूँगा, and then you can answer them simultaneously. So the first question is, and it's by Rosina: how to balance social mandate and passion with financial sustainability, especially at this time of financial turmoil. And the second question is, grants come with its own agenda and time bar, which is very true. Sustainability is always an issue. What other financial inputs can one add? ओके, रोजीना, ये मैंने यहाँ पे पहले भी शेयर किया था कि स्पेसिफिकली जब परिंदे स्टार्ट हुआ, तो मैंने खुद ने ये किया था कि फॉर इयर्स आई डिड फुल टाइम जॉब। और मैंने मेरा अपना एक जो है वो मैंडेट मैंने बनाया था कि मेरी सैलरी का 10% आई विल पार्क फॉर परिंदे, बाकी सब मेरा पर्सनल उसमें जो भी मैं करूँ। तो ये मेरी मैं अफोर्ड कर सकती थी। मैं नहीं एक्सपेक्ट करती कि सारे एंटरप्रेन्योर्स इसको अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जब आपका आइडिया बहुत नया है, आपने बहुत बेबी आइडिया अभी भी कंसीव किया है, और आपके पास एक गुंजाइश है कि आप अपना टाइम डिवाइड कर सकते हैं, so to keep yourself financially motivated, I highly recommend that you have a part time job or a part time something which keeps you going. बहुत दफ़ा आइडियाज़ बंद हो जाते हैं, ख़त्म होते हैं, वो इसीलिए कि फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी नहीं आ पाती। So I was explaining that how after year now I'm at the point where we are getting grants, we are doing grants. So I'm able to take this decision that I quit my full time job. But even when I quit my full time job, I would like to tell कि मैं पार्ट टाइम कंसल्टेंट ट्रेनिंग ज़रूर करवाती हूँ, सो दैट आई डू नॉट लाइक, वो मेरा स्किल सेट है। आई वर्क विद फेसबुक पाकिस्तान, आई वर्क विद अदर प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू मेरे पास महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार अगर कोई ट्रेनिंग आती है, ना आई अर्न, सो मेरे लिए वो मोटिवेशन है। सो आप अपने इस तरीके के आइडियाज़, अपने इस तरीके के रोड मैप ज़रूर बना सकते हैं एज ए यंग एंटरप्राइज, जिसपे आपको पता हो कि कोविड के अंदर एक बहुत बड़ी रिसर्च भी आई हुई है जो 1 साल से चल रही है कि इफ़ योर स्किल सेट इज़ इन वन थिंग, you are not going to survive in the coming time. So you need to build 2 to 3 skill set. You need to have 2 to 3 areas where you can grow. बिजनेसेस के अंदर भी आप एक से ज़्यादा आइडिया या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट रखें। सो अगर मेरा मेंटल थेरेपी या मेंटल हेल्थ का जो है वो प्रोडक्ट कोई नहीं खरीद रहा, वो सर्विसेज को कोई अवेल नहीं कर रहा, सो ओके, आई कैन रन ऑल्टरनेट एजुकेशनल कैंप। मैं क्या ऐसा और कर सकती हूँ जिसके ज़रिए जिसमें लोग जो है वो पे कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द वेज थ्रू विच यू कैन मेक योर प्लान। अगेन आई वुड से कि कुछ मॉडल्स को उठा के देखें, कुछ सोशल एंटरप्राइज या कुछ दूसरे लीडर्स के मॉडल्स को उठा के देखें, उनकी प्रैक्टिसेस को देखें। दैट्स विल रियली बी हेल्पफुल फॉर यू टू मेक योर ओन प्रैक्टिस। जो दूसरा है कि ग्रांट्स के अपने एजेंडा होते हैं, दैट इज़ राइट। लाइक अगर 6 महीने का ग्रांट है या 1 साल का ग्रांट है, हर चीज़ बहुत स्पेसिफाइड लिखी हुई होती है कि ये पैसा इसके लिए, इसके लिए आपको पूरी रिपोर्टिंग करनी होती है। सस्टेनेबिलिटी की सबसे सेल्फ सस्टेनेबल यही है कि आपका अपना प्रोडक्ट या सर्विस ऐसा हो जिसके लिए लोग पे करने को तैयार हैं, राइट। सो सोशल एंटरप्राइज में यू हैव दैट मार्जिन। सोशल एंटरप्राइज में इसीलिए आप नॉन फॉर प्रॉफिट और फॉर प्रॉफिट दोनों के लिए काम करते हैं। सो अगर मेरे पास ग्रांट भी है, उसके साथ साथ आई कीप सेलिंग माई वर्कशॉप्स। सो ये सस्टेनेबिलिटी सबसे ज़्यादा इससे आती है। लेकिन अगर आप प्योरली एक एंटरप्रेन्योर के आइडिया की तरफ है, जहाँ पे आपका नॉन फॉर प्रॉफिट या सोशल वर्क से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर आपका प्रोडक्ट या सर्विस इतना जानदार होना चाहिए विच इज़ द नीड और द
demand of the market which keeps going, which you keep selling. So sustainability इस तरीके से जो है वो कुछ achieve हो सकती है, financial sustainability. Right. So I think that's it. Um, we're done with our questions, and it was great talking to you, Sonal Appa. Uh, Same काफी here. अरसे के बाद वापस आपसे बात हुई, and it was amazing to hear from you, to hear your thoughts. I think कि हमारे पास जितनी भी audience यहाँ पे बैठी है, उन्होंने काफी कुछ जो है वो social enterprise और entrepreneurship के बारे में सीखा है, and it has, I believe, given us a lot on how to go with the passion that we have. वो inner calling को हमें सबसे पहले ढूंढना है, and then we have to go with it simply. Again, thank you so much for being here with us today. And for those of you who joined late, who want to watch this webinar, we have a YouTube channel called Career Substack Videos. जिसका link जो है वो chat box में दिया गया है. You could simply click on the link and go and watch the webinar again. Again, stay tuned with us. Next time we're going to come with some new exciting webinars and sessions as well. Up until then, thank you so much and goodbye. Thank you. Take care.